मैं अपने दोस्त हाजी साहब को, हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब, जो चिश्ती ऑर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ा अजमेर शरीफ बड़ा प्यारा है, कभी मौका मिल गया तो इनके बारे में बात करेंगे, मगर आज हम चाहते हैं कि ये आपने प्यार भरे अंदाज से हमें कृतार्थ करें। हाजी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। सलाम, आदाब और आजिज़ाना इस्तकबाल तमाम बुज़ुर्गवार जो हमारे साथ मौजूद हैं डाइस पे। I extend my humble gratitude and regards to the Shri Foundation, Kanoria Foundation, and the entire team of brilliant youth and the elders of the Kanoria family, so humbly headed by Janab Shri Hari Prasad Kanoria Sahab, and all those volunteers who are involved in creating this platform for expressing the virtues of unconditional love from all faith perspective. अभी बेहद खूबसूरत अंदाज में, अल्फाजों में और ख़ामोशी में जो गुफ्तगू हुई, उसको महसूस करना ज़्यादा नज़रमंद रखता है बजाय इसके कि हम उसको समझें अपनी अकल से। और मैं इस यकीन के साथ कहता हूँ कि जो भी डॉक्टर साहब ने यहाँ फरमाया, हम सब ने उसको महसूस किया। यह है इश्क के मामले। बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ों में, अल्फाज में हमारी बुज़ुर्गवार ब्रह्मा कुमारी दीदी साहिबान, जो हमारे अजमेर शरीफ से बहुत करीब माउंट आबू में जहाँ मेन सेंटर है, वहाँ से तशरीफ़ लाईं। और जब वो अपनी बातों से, अपने अल्फाजों से अपनी ख़ुद की ज़िंदगी का इजहार हम सब के साथ कर रही थी, क्योंकि देखें, मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि जब भी कोई आध्यात्मिक गुरु और ऐसे बुज़ुर्ग हमारे साथ होते हैं, वो सिर्फ बोलने के एतबार से अपने अल्फाजों को लोगों तक नहीं पहुंचाते, अपने ख़ुद के ज़ाती एक्सपीरियंस जो ख़ुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, उसको शेयर भी करते हैं। तो मुस्तकिल जब वो अपने एक्सपीरियंस को हम सब से शेयर कर रही थी, मैं बिल्कुल उनकी ज़बान जो थी, अल्फाज हिंदी ज़बान में, तलफ़ुज़ में, लेकिन हर अल्फाज को मैं कनेक्ट कर रहा था उस माहौल से जिस माहौल से हम बड़े हुए बारगाह गरीब नवाज में। एक दरवेशाना, फ़कीराना और आजिज़ाना माहौल, जो आपने फरमाया कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में देना सीखना चाहिए। लेते तो सब हैं, लेकिन उस देने के लिए भी हमें लेना पड़ता है। उस देने के लिए भी हमें लेना पड़ता है। और बारगाह गरीब नवाज में हमारे देश हिंदुस्तान के बारे में बचपन से हम ये 4 अशार सुनते हुए बड़े हुए हैं कि फरमाया जाता है पूरे हिंद के लिए कि तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। दारुस्सलाम, abode of peace. For some of our international delegates, I'll use some English translation for these verses. कि तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, नई तजल्लियाँ है सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी एक निगाह से काम चलता है या ख्वाजा। कि this abode is the land of peace. Every moment, day and night, there is divine shower of grace, tajalliyat.
Those who are intoxicated with the love, जो मस्त होते ना मस्त, with the divine love, they have no fear and no sorrow. With the blessed glance, जो देने की बात हुई ना, नजरे करम, उस पे हम आ रहे हैं कि तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा. वो that blessed glance of benevolence, यही देना है. मौलाना रूम का जिक्र हुआ. महफिल समाज चिश्तिया सिलसिले की रिवायत है, रूह की ग़िज़ा है, जो इश्क बयां होता है उसमें. तो अगर आप कुछ हजरातों ने अगर मौलाना रूमी के सिलसिले के दरवेशों को देखा होगा जो अपनी मेडिटेशन करते हैं, सफ़ेद लिबास होता है और रक़्स बिस्मिल जिसको कहा गया है, रक़्स इश्क. अगर हम नोट करें कि किस तरीके से वो रक़्स हकीकी की तरफ जाते हैं, तो घंटों वो बिना रुके, बिना अपने फोकस को लूज़ करे गोल घूमते हैं, जिस तरीके से दुनिया रिवॉल्व हो रही है. एक हाथ दरवेश का आसमान की तरफ होता है और दूसरा हाथ ज़मीन की तरफ, और इसी अंदाज में घंटों, एक आम इंसान जिसने वो इश्क के जाम नहीं पिया, वो तो 5 मिनट में अगर हम गोल घूमे तो हमें चक्कर आने लगेंगे, बैठना पड़ेगा. लेकिन हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, घंटों इसी अंदाज में. इसका माना यही है कि दरवेश की ज़िंदगी के इस हाथ से वो उस कुल कायनात के मालिक से लेता है और दूसरे हाथ से ज़मीन पे जो मखलूक है उसको देता है. तो खालिक से लेना और मखलूक को देना, यही दरवेश की ज़िंदगी है. और यही जो बात आपने अपने अंदाज में कही, दरवेश भी उसी अंदाज से जीते हैं. Spirituality, innovation and humanity. Just a few moments to get back to the session, because ये इश्क की जो बात होती है वो कहीं और ले जाती है. लेकिन हम इस दुनिया में हैं, we are in the 21st century, and in today's time we are seeing that whatever experiences we are sharing here, they are not resonating out there in the world with today's youth, today's generation. Technology is replacing many of these teachings that have been brought down to us from generation to generation, from the gurus, from the saints, awliyas, the Ganga Jamni Tehzeeb that we have been grown up. But we must reassert to this understanding that no matter how important in today's world is digital understanding, information is Google, we all log on to Google for information, which is good. But at the end of the day, Google can never replace a guru. Facebook has its importance that we are sharing around the world. But in this modern technology where we need to have some time in a day that off the Facebook, we reflect on the book of our own deeds. We have to face those books of our own deed. What have we done throughout the day? जिसको अमाल नामा कहा जाता है, book of our deed. And we all have to face that. So in this revolution of digitalization, which has made our life easy, connectivity, we must reflect on the inner essence of our soul. जिस तरह हम अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, अभी we all had lunch, we had breakfast, then again we're going to have high tea, we're going to have dinner. If you go to a dietitian, a nutritionist, they will prescribe you 5 meals a day in small portion to have a very healthy lifestyle and a healthy body. What about the soul? What are the intakes and the nourishments of the soul? चिश्तिया सिलसिले में समा, महफिल समा जिसको कहा गया, उसको रूह की ग़िज़ा बताया गया. ज़िक्र रूह की ग़िज़ा बताया गया. We just had this beautiful silent meditation. ये रूह की ग़िज़ा है. तो जिस तरह हम अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखते हैं,
we have to keep the soul healthy and nourishing. If we neglect the soul entirely and just focus on the body, we might have a healthy body. But at the end of the day, after a few moments of those reflections, the soul will become unhealthy. And what is the first reflection of an unhealthy soul on the physical body? What is the first reflection? Can anybody just share? सबसे पहला असर जिस्म पे रूह की बीमारी, अगर बीमार रूह होती है, sickness of the soul, वो क्या होता है? It comes eventually. Stress also, it comes eventually. ये भी होता है. But the first effect on the body, if the soul is sick, it appears on our faces. जो हमारे चेहरे का नूर होता है, वो उठा लिया जाता है. The grace, तेज जिसको कहते हैं. I'm not talking about the complexion of the skin. It's not white, brown or black. It's the नूर. जो तेज है हमारे, रौनक जो रहती है हमारे चेहरे की, वो उठा ली जाती है. And that is the moment that we should start reflecting on the inner dimension of our presence. क्योंकि हर रूह को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा गया है. Every soul has a reason to be here and a purpose. And because of the blind materialistic pursuit, if we lose out on that purpose, we might have millions of dollars in a bank account, but the bankruptcy would be inner. And platforms like these, in the morning, Farooq Abdullah Sahib shared some of his concerns, what he has seen from his young age to today's age, what is happening in India. But I must say that is the concern from throughout the world. हमारा देश हिंदुस्तान अपने आप में एक यूनिक देश है. जो diversity, जो cultural unity की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है. Our greatest strength is our unity in this extreme diversity. And we have to cherish it, nourish it, and celebrate it in the purest of its essence. We can't just be complaining that this is not happening the way it should be. We agree that there are certain things on religious lines, on spiritual understanding, on faith-based perspective. A few fringe elements are attracting the media, are attracting the people's consciousness in a negative sense. But believe me, they are a minority. बारगाह अजमेर शरीफ में रोज़ 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं और हर मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं. आज 800 साल से अजमेर शरीफ का जो लंगर है, the food that has been served has been pure vegetarian. Not even onion and garlic is used in that. What were these traditions? What was the reason for making these traditions, which are so alive even today? To take care of the human heart. कि हम एक दूसरे के दिलों का ख्याल रखें. किसी भी अल्फाज से, किसी भी बयान से, किसी भी हमारे किरदार से, किसी के दिल को हम तोड़े ना. बुल्ले शाह ने फरमाया है, पंजाबी में है, मेरी पंजाबी इतनी ज़्यादा माकूल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि मंदिर भी तोड़ दो, मस्जिद भी तोड़ दो, इतना के काबे की दीवार है वो भी तोड़ो, ये सब वापस बन सकती है, लेकिन किसी इंसान का दिल ना तोड़ो, क्योंकि उस दिल में रब बसता है. So that is the divine attribute that we all carry within our heart. और आज हम रिलीजन के नाम पे कॉन्शियस पैदा कर रहे हैं, एक नेगेटिव कॉन्शियसनेस जो हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं होती थी. तो हम सबको मिलके we have to send this reason very clearly कि आज इस हॉल से जब हम बाहर जाएं तो हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, I'm sure you're all connected with lot of institutions, lot of youth. We have to reassert. अगर इस देश में जो सदियों से हरा भरा रहा है और उस हरियाली को हम आने वाली नस्लों में भी देखना चाहते हैं, तो हमें ये बात वाज़े करनी होगी. We have to say it loud and clear without any hiccups or without shying away
कि हरी भी हमारे हैं और अली भी हमारे हैं, तभी हमारे देश भारत में हरियाली आएगी। इन्हीं कुछ अल्फाजों के साथ वक्त की ताख़ीर को देखते हुए, वरना इश्क में जज्बात ऐसे होते वक्त का ध्यान नहीं रहता, कुछ ख्वाजा गरीब नवाज ने जो फरमाया, और वो बिल्कुल इसी रेजोनेट में था। आपने कहा कि हमें नेचर से सीखना चाहिए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती has said in the 11th century that in order to serve the creation, develop the attributes of the creation so that you may serve the creator. River like generosity, दरिया जैसी सखावत, sun like bounty, सूरज जैसी शफकत, and earth like hospitality, ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, because these natural attributes never make a distinction on whom they are serving. They are part of the makhluk, the creation, and they have been created to serve the makhluk. Khaja Sahab, 1 month before he took parda from this dunya, he gave an important tarbiyah, a note, which became the founding principle of the Chishti Sufi order, which I have translated in English, which I'm going to share with all of you here, where he said, love towards all, malice towards none. Mere talk of peace will avail you not. Mere talk of God and religion will not take you far. Bring out all the latent powers of your being and reveal the full magnificence of your immortal self. Be overflowing with peace and joy and scatter them wherever you are, wherever you go. Be a blazing fire of truth. Be a beauteous blossom of love. Be a soothing balm of peace. With your spiritual light, we all carry this spiritual light. With your spiritual light, dispel the darkness of ignorance, dissolve the clouds of discord and war, and spread goodwill, peace, harmony among the people. Never seek any help, charity, or favors from anybody except God. Never go to the courts of the kings, but never refuse to bless and help the needy and the poor, the widows and the orphan, if they come to your door. This is your mission, to serve the people. Carry it out dutifully and courageously. And what followed is the 2 lines which often bring tears to my eyes, that such a great saint and master, at the conclusion of his life, he's asking us, carry it out this courageously and dutifully, so that I, as your spiritual master, as your pure murshid, may not be ashamed in front of the Almighty and the holy predecessors in our Sufi order. ये जो मुकद्दस अमानत हमें मिली है, हमारे किसी भी अल्फाज से उन बुजुर्गों को शर्मिंदा ना होना पड़े खुदा के सामने, हमारे किसी कमी की वजह से। हमारे माँ बाप से जो हमें तरबियत मिली है, हमारे पेरेंट्स से ये तरबियत मिली है। I can see in the youths of the Kanoria family that they've been trained and groomed so well कि आने वाले वक्त में कभी भी अपने किरदार से, अल्फाज से अपने बुजुर्गों को कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। और इसी तरह जो कनौरिया फाउंडेशन की तरफ से ये मोहब्बत के पैगाम को हिंदुस्तान में नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जानिब से पूरी दुनिया में आम करते रहेंगे। मौलाना रूमी की एक आखिरी कोट है, बाजा बाजा हरंच हस्ती बाजा, सद बार तौगा शिकस्ती बाजा, इधर गाए माँ ना उम्मीदी नीस्त, इधर गाए माँ उम्मीदस्त। Come, 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 whoever you are, come. Even if you have broken your vow of repentance, come. These doors of ours are not the doors of despair. These are the doors of hope. And truly, India has been and always been the door of hope to the entire world. And together, we can fulfill that commitment of remaining India as the door of hope for the whole of humanity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you again for having us here.